Hello GATE aspirant, in this video we are going to talk about how to qualify GATE examination in just 15 days. Yes, you heard it right. So 15 दिनों में आप GATE क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे. So let's get started with qualifying marks in GATE, right? So suppose if you are able to score at least 30 marks, then you are qualified for the GATE examination, right? So in this video we are going to discuss each and everything, right, step by step, so that if you follow, right, then you will definitely qualify for GATE examination, right? Again, disclaimer, I'm saying that you will able to qualify, right? You are not able to top, right? So if you want to qualify GATE examination, then you must watch this video till end. First thing in order to qualify GATE examination is aptitude section. जी हाँ, for those who don't know, right, so aptitude section consists of 15 marks, 15 मार्क्स का होता है, राइट, जिसमें इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, मैथ जिसे बोलते हैं, वो सब होता है, राइट. तो ये 15 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई गेट. इफ आई कंक्लूड द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज दैट एप्टीट्यूड सेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स, राइट. एप्टीट्यूड तो आपको आता है, इंग्लिश आता है, राइट. सो 15 मार्क्स काफ़ी आसान होते हैं, राइट, काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू आर एबल टू डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन, राइट, एप्टीट्यूड सेक्शन. सो नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड स्ट्रेटेजी. सेकेंड स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई गेट एग्जामिनेशन इज दैट very important. You have to solve previous 11-year paper, right? Previous 11-year question. Let's say from 2010 to 2021. ये 11 सालों का आपको निचोड़ निकालना है, राइट. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसको थ्रोली सॉल्व करना, राइट. अच्छे से मास्टर कर लेना, राइट. 11 साल का पेपर, राइट, इजीली तो कर सकते हो 15 दिन में, राइट. सो दिन रात लग जाओ और 11 ईयर क्वेश्चन को जितने भी ये क्वेश्चन अच्छे से कर डालो, राइट. ये अगर आप इसको कर लेते हो, राइट, तो ये हेल्प करेंगे आपको 15 मार्क्स लेने में, राइट. क्योंकि आप अगर प्रीवियस रिसर्च करो, राइट, प्रीवियस पेपर्स देखो, राइट, तो 20%, राइट, क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, राइट. जस्ट लिटिल बिट कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, बाकी क्वेश्चन तो आ रहे हैं, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो कंक्लूजन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज यू हैव टू बी मास्टर ऑफ लास्ट 11-year पेपर, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 11. So aspirant, till now what we have discussed, first thing we have discussed is that aptitude section which consists of 15 marks, and later second strategy we have discussed is that previous year question, right, from last 11 year, right. So if we add, right, if you sum up that 15 how much, 30 मार्क्स ऐसे ही हो गए, राइट. सो ये 30 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रेटेजी की, जो आपको अगेन 15 मार्क्स दिया गया. तो मार्क्स टोटल कितने हो जाएंगे, 45, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रेटेजी. थर्ड टास्क यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई गेट एग्जामिनेशन इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. जी हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंसिस्ट टोटल 15 मार्क्स, राइट, 15 मार्क्स का होता है. And this section can play a very important role in order to qualify GATE examination, right. Why I'm saying this, right, because in some branches, some streams like computer science, right, there is a separate subject, right, which is DMGT, right, discrete mathematics and graph theory. So if you combine both subjects, right, engineering mathematics and discrete mathematics, right, so that will total at 15 to 20 marks, right. Because if you see the previous year question, right, then the question being asked from engineering mathematics and discrete mathematics is in between 15 to 20, right. So this third task will give you 15 marks, right. So we have to discuss 3 strategies, right, which will help you to in order to qualify GATE examination. What are the 3 strategies? I'll conclude. Before we wrap up the video, right, at the end of the video I will going to disclose a bonus tip for you, right. So watch till end, right. So if we conclude this video, right, so first thing I mentioned that English section and aptitude section which consists of 15 marks, right, 15 marks वहाँ हो गए. Second task you have to perform is previous year question from last 11 year, right. Let's say from 2010 to 2021. ये 11 साल के पेपर को अच्छे से आपको पढ़ लेना, राइट, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना. 11 साल के हैं, राइट, और 15 दिन आप डेफिनेटली कर सकते हो, राइट. एंड थर्ड टास्क आई हैव told that engineering mathematics and discrete mathematics, right, which consist of 15 marks, right. So these 3 sections will definitely help you to qualify GATE examination, right. And what is the bonus tip which I have told you, right? The bonus tip is that lemons, right. What is lemons? So this is the last minute short notes, right. So this short note will play a very important role, right. So आप जितने भी शॉर्ट नोट्स अभी तक बनाए, राइट, उसको आपको क्या करना है, 3 times a day, राइट. डॉक्टर जैसे कहते हैं ना कि 3 टाइम a day एक दवा लेना, राइट. मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, राइट. सो 3 times a day you have to revise the short note, right. If you revise well your short note, that will help you to in calculation, in recalling the concept while you are sitting in the examination hall.
So guys, लग जाओ, right? If you want to qualify get in this year itself, right, then जी जान लगा दो, right? फोड़ दो, तोड़ दो, right? जो भी करना कर डालो, सिर्फ 15 दिन में आप qualify कर सकते हो, right? And share this video with other GATE aspirant, right? So that will help them to achieve this qualifying marks in GATE examination, right? So make sure you subscribe the channel and share this video with right now. One more thing is that you have to fight till end, right? Till end means what? Means the 3 hours, right? 180 minute, right? 180 minute to 1 minute. You have to fight all those 180 minute, right? If you fight those 180 minute, right, with focused mind, then you will definitely succeed.